Hello, welcome back to another live stream on the Cricket Channel brought to you by Dafa News. The show is called Cricket with Jamie. I am Jamie. We're talking cricket. कल के शो में दोस्तों हमने पहला टी20 रिकैप किया था बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान जो रोहित शर्मा की टीम जी हाँ रोहित शर्मा की टीम क्योंकि 14 महीने बाद 14 months after his last T20 which happened to be that dismal 10 wicket thrashing at the hands of eventual winners England in the 2022 T20 World Cup semi-final रोहित शर्मा वापस आए टीम को लीड किया रन नहीं बना पाए डक पे आउट हुए थे बेचारे शुभमन गिल पता नहीं क्या कहाँ देख रहे थे क्या सोच रहे थे शायद मोहाली की ठंड उनके कानों के बीच लग गई थी but whatever it was the bottom line is Rohit Sharma's team did win the first T20 चलिए अफगानिस्तान है अब तक पिछले 5 मुकाबले में नहीं जीत पाई अफगानिस्तान टीम इंडिया से कमजोर टीम है राशिद खान नहीं थे यू एक्सपेक्ट इंडिया हु बीटन एवरीवन इन T20 आईज इन बायलैटरल सीरीज एट होम टू स्टॉम्प ओवर अफगानिस्तान और वही हुआ लेकिन आज जो मैं मुद्दा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है एक ऐसा मुद्दा जो काफी समय से नॉट जस्ट इन द लास्ट 14 months since Rohit and Virat and KL Rahul have been away from the T20I side, but something which has dogged down Indian teams in the last decade at least. अगर हम T20 वर्ल्ड कप्स के बारे में बात करें और वो है बैटिंग अप्रोच और क्या अप्रोच सबसे बेस्ट है इस इंडियन टीम के लिए 5 साढ़े 5 महीने के बाद जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है North America on untested tracks as well as in the West Indies. What is India's best T20 approach? Now, हम देख चुके हैं कि पिछले 14 महीने में जैसे कि मैंने कहा था जब रोहित विराट और केएल राहुल नहीं है तो टीम हाँ थोड़े कम टीमों से खेली है ज्यादातर घर पे खेली है आयरलैंड आयरलैंड में खेली है वेस्ट इंडीज में अभी हारी थी एक क्लोज सीरीज Asian games again yes the team got a goal but we're not going to look too much at that we're going to have to look at in the last few years in bilaterals what kind of batting approach has worked काफी बार टीम 200 पार कर चुकी है बहुत बार 175 190 195 के आसपास टीम बना चुकी है और टीम का टेम्पलेट जैसे कि आप जानते हैं चाहे हार्दिक पांड्या कप्तान हो या फिर रोहित शर्मा कप्तान हो या फिर स्काई कप्तान हो the team's approach has traditionally been to chase. It's been problematic when it comes to T20s because chasing, yes, you have the skill to chase, you have fantastic batsmen to chase, the best of which is Virat Kohli. But कहीं ना कहीं जब आपका approach batting पहले के टाइम पे नहीं चलती है तो you do often end up with under par scores. And I think the T20 World Cup of 21, the T20 World Cup of 22, as well as the Asia Cup of 22 when it was played in the T20 format, this is enough evidence that when batting first, India just does not have the required assets or the approach or the intent to put up proper T20 scores. अब हम जानते हैं कि विराट कोहली इंडिया के सबसे सफल बल्लेबाज हैं अंतरराष्ट्रीय T20 में 52 का एवरेज आउटस्टैंडिंग तकरीबन 140 का स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा इज सेकंड इन लाइन बट ओवरऑल when it comes to T20 World Cups, he's not crossed 200 for the last three, if I'm not mistaken, 4 T20 World Cups. Then you have youngsters, Shubman Gill, jinka form itna acha nahi hai to be fair. Yesterday, he at least his strike rate was hovering around the 200 mark. Chaliye, zyada run nahi bana paaye. Then you have Jaiswal, who's batting phenomenally. You have Jitesh Sharma, जो 6 अंतरराष्ट्रीय T20 पारी में 3 बार 10 से कम आउट हुए so we can ignore those scores लेकिन 3 बार जब उन्होंने 10 पार किया और वो डबल फिगर्स में आए 25 30 35 तो जितेश शर्मा जो कि 5 और 6 में खेलते हैं उनका स्ट्राइक रेट इज बिटवीन 155 and 185 you've got Sky all time best T20 batsman in terms of boundary making in my opinion. And you've got Shreyas Iyer, you've got Hardik Pandya, who's been a fantastic finisher. Tilak Verma, yahan wahan. चलिए आजकल इनका थोड़ा खराब टाइम चल रहा है. And then you have Rinku Singh, who's been the most promising of the fringe players to get a chance in the last 5-6 months. अब अगर हम वो 14 महीने देखें जब केएल राहुल विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं थे so there's been a visible approach from the middle order and that is to go on and take the bowling on. I think Jitesh has done this very well albeit in a very small sample size. I think Shreyas Iyer has played a few matches. He's tried to do it. Jaiswal has done it very, very well. Tilak Verma started well, has not been able to sustain. Sky is Sky. I mean, Sky is brilliant whenever he comes to bat in T20s. And Rinku also has done this very, very well. तो T20 वर्ल्ड कप को अगर हम देखें और मैं इस लिहाज से आपके सामने ये सवाल पेश कर रहा हूं a few months ago रोहित शर्मा ने खुल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि T20 में
अब एंकर की जरूरत नहीं है। What then does one do with the like of someone like a Gaikwad, जो आजकल नहीं है क्योंकि वो injured है, but he takes his time to get going? What about Virat Kohli, who despite the brilliant stats often does take time to get going and has a somewhat of a middling strike rate against spin? What about Shreyas Iyer, who also at times needs a base to get going? What about KL Rahul, who, yes, 14 months he's not played for India in T20s, but we all get that feeling कि वो वापस आएंगे T20 World Cup के लिए. He also takes some time. So strike rate के लिहाज से देखें, what do you feel is the best approach to India? Traditionally, they've been a bit conservative. They've not overall, I would say, maximized the power play. मेरा ये मानना है कि power play में अगर आप 70-75 टारगेट करोगे, फिर आप सिचुएशन को असेस करके आप बाकी के 14 ओवर्स सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हो. बट लाइक रोहित सेड, आई एग्री, देयर इज नो नीड फॉर एंकर. डज दैट मीन कि हर प्लेयर आके पहली बॉल से गेंद मारे? ऑफ कोर्स नॉट, बट यू नीड टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले. डू यू थिंक इंडिया, चाहे रोहित और गिल हो, रोहित और जायसवाल हो, गैकवाड जायसवाल हो, गैकवाड गिल हो, गैकवाड रोहित हो, जो भी हमारे चार ओपनिंग ऑप्शन है, do you think they have the best approach to succeed in the T20s? Who would you feel is the best person to bat at number three, keeping in mind the target? Lakshya hai T20 World Cup jeetna. Virat Kohli, Shreyas Iyer, Suryakumar Yadav. Who do you think? And from the middle order, how impressed are you with Rinku Singh, with Jaiswal, with Shivam Dube yesterday? A fringe player coming in, getting 60 or 40. What combination do you think? मैं सिर्फ यहाँ बैटिंग की बात कर रहा हूँ. What combination do you think is the best for these next two T20s against Afghanistan during the IPL? Which player should be picked up, which player should be watched, and which player should be dropped if their IPL is not a success story? इस लिहाज से, I want to know from you, the viewer of this live stream, what is India's best T20 approach? मैं कह चुका हूं, पावर प्ले में 70-75 टारगेट करो किसी भी हालत में, चाहे आप 2 विकेट गवा दो. देन असेस द कंडीशंस एंड देन गो हार्ड फ्रॉम द 11th और 12th ओवर. डू नॉट यूज द ट्रेडिशनल अप्रोच कि हम पिछले 4 ओवर में, आखिरी के 4 ओवर में रन मारेंगे. यू हैव बैट्समैन, टेक सम रिस्क. आई एम नॉट सेइंग गो entirely, balls up madness, but take some risks, take more risks, like Jitesh is doing, like Rinku is doing, like Jaiswal is doing. And I believe it'll put you on the right path to success at the T20 World Cup. चलिए, मैं तो बोल चुका हूं और मैं आगे बोलूंगा, लेकिन जो कुछ कमेंट्स आए हैं हम इनसे शुरुआत करते हैं. आई थिंक आप में से बहुत लोग अलग अलग व्यूज शेयर करेंगे. गौरव सिंह, हे जय भाई, कैसा कैसा का है? बढ़िया हूं, आप कैसे हो? Gajodhar कह रहे गुड आफ्टरनून आपको भी. Yesterday's match showed us how diverse our T20 options are and we don't need to stick to the regular names. सही बात कह रहे हो आप. Impressive performance from the big man Dube. It was. दही बल्ला verdict is bad. इंडिया विनिंग एंड जुम्मे की दोपहर में क्रिकेट पर चिट चैट, दिल खुश हो गया. ऑलमोस्ट द वीकेंड. सही बात है, दही बल्ला एडिक्ट. It's the weekend. It's almost here. I'm looking forward to it. Good to have you back. Swapnil is putting his ideal T20 11. He's saying Yashasvi, Rituraj, okay, Sky, so no Rohit, no Virat, Tilak, Jitesh, so no KL Rahul, Rinku, Hardik, Akshar, Bishnoi, Arshdeep, Bumrah. Swapnil, to my mind, that's a very, very good, a very innovative, yes, lacking on experience, but this is the kind of T20 team I believe should be in the future. But जब तक रोहित हैं, जब तक विराट हैं, इनकी जगह मेरे ख्याल से बनती है फिलहाल, because the selectors have said भाई T20 वर्ल्ड कप में हमें ये लोग चाहिए. इनके आंकड़े बहुत बहुत बेहतरीन है. But definitely post the T20 World Cup, I would like to see this kind of 11 be played more often. Good one. Swapnil is still saying in T20 you don't need to go into a shell even if you're 10 for 3. More or less, yes. You can still get to 180 after 20 overs or stop at 140 for 5 if you decide to play it safe. Saving wickets is of no use. बिल्कुल, ये मैं कब से कह रहा हूं. सेव विकेट से आपको क्या मिलेगा? आप ये विकेट घर लेके जाओगे? नहीं ना. So I agree, Swapnil, with your approach. Manish is saying outright aggressive, but shift to caution if few wickets go down early. So basically, what Swapnil is saying, 10 for 3. You're saying, Manish, if it's 10 for 3, then assess the conditions, but overall keep attacking. Also, we should attack with spin early on with Akshar. I know. I was saying this yesterday as well as before. Akshar, unfortunately, एक खराब मैच के बाद उनके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं. But he's actually a viable option in the power play, खासकर Indian conditions में. And I think in the West Indies, I believe कि अक्षर को ज्यादा मौके मिलने चाहिए. Yes, कभी कभार वो पिट जाते हैं, but
He's a kind of bowler. I value street smart bowling, power play type bowling, over traditional bowling where you're just looking to, contain runs. I think Akshay should play a lot more than he has, but let's see. With Kuldeep Bishnoi after power play, बिल्कुल मनीष मैं आपकी बात से सहमत हूँ. Mitash Arora, that's a new name. Welcome, Mitash. Sir, I'm from Delhi and I'm interested in watching Ranji games. Will I be allowed? बिल्कुल, you just have to go there, buy a ticket from the gate and you can watch. Lovely. इस मौसम में हालांकि आजकल बहुत बहुत ठंड है, बट जैन फेब के महीने में एक बैंक्स है लेफ्ट साइड पे, विराट कोहली स्टैंड के नीचे. आप वहां से आराम से बैठ सकते हो. काफी काफी अफोर्डेबल टिकट्स है. आप आराम से देख सकते हैं. Dahi Bhalla is still around. He's saying T20 is all about momentum. सही बात है. Batters might as well get out rather than hardly scoring and eating up deliveries. बिल्कुल. This is what I keep telling my team here जहां पे मैं खेलता हूं. भैया पावर प्ले में 70-80 टारगेट करो, भले 3 विकेट गवाओ. आप अगर आपने पावर प्ले में 75-80 रन मारे, जस्ट गो बॉल्स आउट. बाकी 14 ओवर में यार 100 रन तो आ ही जाएंगे ना on a slow day. So yes, again, it's not entirely bang, 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 but take risks. It's the teams that maximize the power plays. It's the teams that take more risks. They end up winning more T20 matches. That's my observation. Manish, Rahul plays one over maiden to get into grooves. भाई वो बंदा बहुत ही अजीब है T20 में. ऋषिकेश पूछ रहे हैं अगर पंत T20 वर्ल्ड के लिए फिट होता है तो नहीं. ये हम पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ. ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे क्योंकि आईपीएल के 3 हफ्ते या 5-6 मैच, ऋषिकेश, वो इट्स नॉट इनफ टू टेक यू टू द T20 वर्ल्ड कप. यू आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड कप. ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है किसी फिलाना टीम के साथ. आप एक प्लेयर को 4 मैच, 3 हफ्ते, 5 मैच, आप उसके बेसिस पर आप नहीं ले जा पाओगे. ऋषभ पंत को कम से कम 3 महीने कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तब जाके उनकी वापसी आएगी. उनकी वापसी जब आएगी, आप मुझसे लिख के लीजिए, वो उसी अंदाज में बैटिंग करेंगे जैसे कि 1 साल से वो बाहर नहीं थे. ऋषभ पंत उस लेवल के प्लेयर हैं. Dahi Balla addict is slightly worried about our batting depth. So am I. I remember England's T20 World Cup winning squad had hitters all the way. Correct. You need that. Depth really matters. But even if you don't have depth, my friend, by the way, what's your real name? Let me know your real name. Um, Depth matters, like you said, momentum matters, but you need to somehow just cash in. I think the 2022 Asia Cup, which was played in a T20 format just weeks before the T20 World Cup, and then the T20 World Cup, it showed why India's openers were just not fit to play T20 cricket. Rohit Sharma and KL Rahul across the Asia Cup, in the UAE, and then the T20 World Cup were very, very poor in the power plays. India had, I think, the worst, if not the second worst, power play strike rate, power play average at the T20 World Cup. Can you actually expect to win T20 tournaments when players like Rohit Sharma and KL Rahul were the worst or second worst in the power play? Absolutely not. And that puts too much unfair pressure on poor Virat Kohli, on poor Hardik Pandya, on poor Suryakumar Yadav. And then when Suryakumar Yadav doesn't succeed in 2 T20 World Cups, लोग कहते हैं ये तो बकवास प्लेयर है. लेकिन consistently दो T20 World Cups का खेल चुके हैं, he's often not had the starts he gets when the team is scoring runs in India. So it's tricky. There's no concise way to look at it. But मेरे हिसाब से in T20 cricket, India's problems have started at the top in the last 2.5 years. That's why I would have loved to see Jaiswal be one of the openers, and I would not personally have liked to see KL Rahul and Rohit Sharma opening again. But the selectors have gone back to Rohit Sharma. It's a big leap of faith. I hope रोहित कैन डू थिंग्स. कल के मैच में तो बेचारे डक पे आउट हुए शुभमन गिल के कारण. लेट्स होप कि रोहित शर्मा एट द T20 वर्ल्ड कप on those untested tracks in North America and those slow and low West Indian pitches can bat the way he's batted the last year and 1 day. If he does, India will do much better than they did with Rohit Sharma and KL Rahul at the 2022 Asia Cup as well as the 2022 T20 World Cup. Mitash कह रहे I think Virat's place can be justified if he opens, but I don't think the management is thinking. बिल्कुल, that is a good option because he's much better against pace than against spin. But with Jaiswal around, I don't think Kohli will open. सर जायसवाल को रिस्क लेकर शॉट्स खेलने चाहिए. जायसवाल ऐसे ही खेलते हैं. आपने कितना देखा है जायसवाल को T20 में? जायसवाल सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं. और ये सबसे बड़ी बात है.
उस युवा होनहार खिलाड़ी के। Manish saying in first edition of IPL, Deccan Chargers had Gibbs, Afridi, Gilchrist, Simons, and that's why they were my favorite. We need such players in T20 lineup. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. ऋषिकेश is saying तिलक को बहुत चांस दिया as compared to संजू सैमसन. नहीं, बहुत बार ये कह चुका हूं मैं. संजू सैमसन को T20 में बहुत 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 मौके मिले हैं. संजू सैमसन T20 अंतरराष्ट्रीय T20 के लायक प्लेयर नहीं. आप उनके आंकड़े देखिए, 20 से ज्यादा मैच खेल चुके, एक भी यादगार उनकी पारी नहीं है T20 में. वनडे में संजू सैमसन के आंकड़े देखिए, 18-19 innings, an average of 55 plus, a strike rate of 100 plus. Sanju Samson, I've been saying this for the last 1 year. Sanju Samson should not be persisted with in T20s. Sanju Samson का वैल्यू है मिडिल ऑर्डर में, वनडे क्रिकेट में. उनको इनिंग्स बिल्ड करना आता है, इनको इनिंग्स फिनिश करने आता है, जो कि सूर्य कुमार यादव को अफसोस की बात है वनडे क्रिकेट में नहीं है. सो सैमसन has gotten a lot more chances than तिलक वर्मा. अनफॉर्चुनेटली सैमसन को लेकर वो जो चांसेस हैं वो 2014 से लेकर 2024 तक हैं. तो 10 साल में उनको बहुत चांस मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज नेवर गॉट अ लॉन्ग रन. बट लाइक आई हैव ऑलवेज मेंटेन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट संजू सैमसन इन T20s, उनसे आगे बढ़िए. जितेश इज अ मच बेटर ऑप्शन. एंड अगेन लुक, तिलक वर्मा इज व्हाट 14 15 T20s old. It's too small a sample size. It's a very tough format. Also इन प्लेयर्स को पता है कि यार इनके ऊपर जो तलवार लटक रही है कि भाई हम जितने भी रन बनाए हमारी जगह तो बड़े प्लेयर ले जाएंगे. सो आई विल स्टिल गिव अनदर 6-8 months to तिलक वर्मा बिफोर आई पर्सनली डिसाइड वेदर ही इज गुड इनफ और नॉट गुड इनफ. गजोदर कह रहे आफ्टर वी लूज द T20 वर्ल्ड कप लेटर दिस ईयर, विल विराट एंड रोहित रिटायर ग्रेसफुली, or will they have to be drag kicking and screaming? नहीं, I इंडिया जीते या ना जीते T20 वर्ल्ड कप, विराट और रोहित को उसके बाद छोड़ना पड़ेगा. मैं तो 14 महीने से खेल रहा हूं कि कह रहा हूं कि दोनों वापस नहीं आएंगे. Whatever's transpired, they're back. Whether they asked to come back, whether they were brought back, who knows? अब जब उनको वापस लिया गया है, इनको एक और T20 वर्ल्ड कप दे दो. दुआ करो कि दोनों विस्फोटक बैटिंग करे और इंडिया T20 में कुछ हासिल करे. पर्सनली ये कह चुका हूं पिछले 2 महीने से, खुद के मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत 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 लो हैं इस इंडियन टीम से, क्योंकि यही कोर टीम पिछले 4 T20 वर्ल्ड कप्स में कुछ नहीं कर पाई. तो अब क्या कर पाएगी टफ कंडीशंस में, आई डोंट नो. बट डेफिनेटली पोस्ट दिस T20 वर्ल्ड कप, Virat and Rohit will very, very gracefully exit the T20 stage. Because like I've been saying, they have a lot to offer in one-day cricket and test cricket. Kumar Kanishk is saying, hello, Jamie. Yesterday's match was a near to close example that senior players are not required in T20. I agree with you, as the team is better off without them. बिल्कुल, ये मैं कब से कह रहा हूं. T20 has to be a young man's game. Just bowling department requires the senior ones. Some seniors, but you still, again, आजकल के टाइम में दोस्तों, ये मेरा मानना है, और आप लोग प्लीज, अगर आपको कोई एतराज है तो प्लीज आप मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हो. एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, इट्स ऑल रिलेटिव नाउ. ट्रेडिशनली क्रिकेट में एक्सपीरियंस मींस 10 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट. लेकिन जहां पे हम सबसे छोटे फॉर्मेट में T20 के बारे में हम बात करते हैं, अगर आप युवा खिलाड़ी हो, अगर आप 4 साल IPL खेल चुके हो, तो आपके पास T20 के लिए मेरे हिसाब से काफी काफी एक्सपीरियंस है. अब आपको 36-35 उम्र के प्लेयर्स मेरे हिसाब से नहीं चाहिए T20 में, क्योंकि ये प्लेयर्स भले ही खुद पर्सनल काफी कुछ हासिल कर पाए, कलेक्टिवली इट्स नॉट वर्किंग. आई वुड लाइक टू सी यंगर प्लेयर्स बीन गिवन अ चांस. इनके ऊपर लेस दबाव है, ये कम सोचते हैं, ये थोड़ा रिस्की खेलते हैं. हाँ, रिस्क के साथ आपके फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ते हैं, but that is the nature of T20. The nature of T20, the definition of T20 is कि आपको थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा इंटेंट, थोड़ा रिस्क से खेलना पड़ेगा. तो मैं पर्सनली, जैसे कि बहुत समय से कह रहा हूं, मैं पर्सनली चाहूंगा कि इंडियन सेलेक्टर्स थोड़े यंगर टीम को भेजे. उम्मीदें कम होंगे, अगर फेल हुए कम लोग उन पे गुस्सा होंगे. सो आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ अ यंगर टीम सेंट. मनीष कह रहे हैं डेप्थ की बात सही है. वी डोंट हैव अ लिविंगस्टन, स्टोइनिस, मिचेल, क्लासन डाउन द ऑर्डर. यस, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है, लेकिन जब हार्दिक पांड्या चलते हैं, जब उनका बल्ला बोलता है, तो वो एक बेहतरीन फिनिशर है. लेकिन अफसोस की बात है कि साल के 3-4 महीने वो इंजरी के कारण गायब होते हैं.
सुमंत पूछ रहे हैं, हाय जेमी, who do you think will be favorites for T20 World Cup? I'm still going to say England. I'm still going to say Australia. It's tough to look beyond these two teams, in my opinion. Swapnil पूछ रहे हैं, why does India bring back players like Ashwin and Bhuvi for World Cups out of nowhere, even when they've not played? Ashwin, yes, Ashwin was called back for the 2022 T20 World Cup after a long time, and then called back to the One Day World Cup after a long time. But लेकिन Bhuvi की बात है, Bhuvi had stopped playing Test cricket, in fact, first class cricket in early 2018, but he was still a regular when it came to T20. So I wouldn't put Bhuvi in the same category as Ashwin, but definitely Ashwin was a strange one. डेडपूल कह रहे हैं, भैया क्या आप ए बी क्रिक इन्फो को देखते हैं? क्रिक इन्फो को तो मैं 1998 से फॉलो कर रहा हूं, मैंने 5 साल काम भी किया। मैंने मैंने फाइनेंशियल एनालिस्ट की नौकरी छोड़ी थी, बहुत बार कह चुका हूं। 2005 अक्टूबर 10th 2005 मैंने अपना जर्नलिज्म करियर शुरू किया था क्रिक इन्फो पे। मैं तकरीबन 4.5 साल वहां पे था, और ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने क्रिक इन्फो वेबसाइट नहीं खोला। स्वप्निल भाई, ये तो हमारा सिस्टम है, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट फॉर सीनियर्स। गजोदर रविशंकर सिंह, डिड यू रीड माय आर्टिकल? नो माय फ्रेंड, आई हैव नॉट हैड टाइम टू रीड योर आर्टिकल yet. I will do it on this weekend. Don't worry, don't worry. You've tagged me enough times. As soon as I get time, I will read it. तो हाँ दोस्तों, मैं तो अपना जो मेरे को बोला था आज के शो पे, मैंने बोल दिया कि व्हाट आई थिंक इज द करेक्ट T20 अप्रोच। अगर आपको ट्रॉफी जीतने हैं, अगर आप खुश हो नंबर वन टीम से कि वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल सीरीज जीते, तो ठीक है, मैं आपकी व्यू को सपोर्ट करूंगा। सहमत नहीं हूं, बट आई थिंक यार, आप इंडियन टीम हो यार, इस देश के गली गली नुक्कड़ में इतने बेहतरीन प्लेयर्स हैं, हमारे पास डेप्थ की कोई कमी नहीं, हमारा बेंच स्ट्रेंथ बेहतरीन है, हमारे पास आईपीएल है यार। बट हमारे पास 2007 के बाद कमबख्त एक T20 ट्रॉफी क्यों नहीं आया? आईसीसी की बात कर रहा हूँ, एशिया कप भूलो, एशिया कप के तो ये लोग फाइनल तक नहीं पहुंच पाए 2022 में, और एक आध निदाहास ट्रॉफी जीतकर क्या हासिल किया यार? हम ट्रॉफीज क्यों नहीं जीत पाते दोस्तों T20s में, डिस्पाइट हैविंग द आईपीएल? I don't know. It's a confusing one. निखिल मोरे पूछे, with youngsters you think we can reach semi-final? निखिल, देखिए, यंगस्टर्स के आने से कोई गारंटी नहीं है कि आप टाइटल्स जीत पाओगे या आप सेमीफाइनल्स पहुंच पाओगे। लेकिन यंगस्टर्स से क्या है, वो थोड़े, मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा इन सिंक हैं विद द डिमांड्स ऑफ T20। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बेवकूफ वाले शॉट्स मारो, लेकिन आपको थोड़ा लंबा मानना पड़ेगा, आपको थोड़ा इंटेंट दिखाना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से यंगस्टर्स वो इंटेंट ज्यादा दिखा सकते हैं। लेकिन जब वो फेल होते हैं, लोग कहते हैं, अरे यार देखो, ये बच्चे हैं, इनका दिमाग नहीं है। सो you have to support them when they fail. But I think I'll be surprised, frankly, if this Indian team makes the semifinals. Side question from Gojodhar: what's your favorite bat brand? I love my Grey Nichols. Same boss, Grey Nichols, my favorite. And Slazenger V back in the day. Can we afford to go one bowler less to add one all-rounder? Manish, मुश्किल है दोस्त, मुश्किल है, मुश्किल है। डेडपुल पूछ रहे हैं, शिवम दुबे क्या नया हार्दिक पांड्या है? नहीं नहीं, हार्दिक पांड्या नहीं, फिलहाल तो नहीं है दोस्त। ये मैंने कल के लाइव शो पे भी कहा था। Kumar Kanish is saying, the reason I said about bowling is the new bowlers don't look that promising, except Bishnoi and Bumrah and Siraj, and come back, but not Shami. I understand you do need that senior head, but I think in Arshdeep, despite his young age, you got a pretty decent T20 bowler. Bumrah आएंगे, Shami तो फिलहाल बाहर है, लेकिन I would not be surprised, like I said yesterday, अगर Shami वापस आएंगे। तो मुझे bowling को लेकर इतनी चिंता नहीं है जितना बैटिंग को है। Swapnil कह रहे हैं, the problem with senior players, not the intent or approach, but the mindset. Yes, but intent, approach, mindset are all linked, as they fail to evolve with the time and don't update it. I think Virat Kohli has updated himself pretty well, as has Rohit, but unfortunately, collectively, their teams haven't won trophies. So I'm not saying they lack for anything. They have all the skills. I mean, look at the way Virat Kohli keeps transforming himself in the IPL. I just wish consistently the others would also support him and India won more titles. सुमंत कह रहे, would love to meet you personally, Jamie, big fan of yours. शुक्रिया दोस्त, होगा होगा, जरूर होगा। निखिल सहोता पूछ रहे, भैया अगर टैलेंट है तो बुमराह का अल्टरनेटिव अब क्यों नहीं है? देखो, बुमराह जैसे कि युवराज थे, जैसे कि सहवाग थे, ये ऋषभ पंत, ये वंस इन अ जनरेशन टाइप रेयर प्लेयर्स हैं।
बुमराह ने इतना हासिल किया तो अनफॉर्चुनेटली हम बाकी लोगों में अब जसप्रीत बुमराह ढूंढते हैं। इस देश में पेस बॉलिंग है। उमरान मलिक कहाँ गया? मोहसिन खान को मौका दो यार, यश ठाकुर को मौका दो। बट अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी मोहम्मद सिराज से पे ज्यादा टिके हैं। हम मोहम्मद शमी पे ज्यादा टिके हैं। इट्स गोज बैक टू व्हाट आई बीन सेइंग सिंस द एंड ऑफ द वनडे वर्ल्ड कप। इंडियन क्रिकेट अभी इस समय सारे प्लेयर्स को तीनों फॉर्मेट्स को खिलाने में क्यों अड़ी है? डू व्हाट अदर टीम्स डू। बेशक एक अलग टेस्ट टीम खड़ा करो। हम क्यों हर बॉलर, हम शामी को तीनों फॉर्मेट में खिलाएंगे, हम सिराज को तीनों फॉर्मेट में खिलाएंगे, हम ऋषभ पंत को तीनों फॉर्मेट में खिलाएंगे। It's not possible to expect every single player. The chances of losing form across three formats. मोहम्मद सिराज बेहतरीन वनडे बॉलर है, बेहतरीन टेस्ट बॉलर है, लेकिन वो T20 बॉलर नहीं है। पिछले दो आईपीएल में उनकी इकोनॉमी 10 से है, लेकिन फिर भी हम उन्हें खिलाएंगे। मोहम्मद शामी के पास लगातार दो बढ़िया आईपीएल है, लीडिंग विकेट टेकर एंड सेकंड लीडिंग विकेट टेकर, but he's not a death bowler. So whatever time is left with Shami, with Virat Kohli, with Rohit Sharma, I would like to see them not persisted with in all three formats, so that जो भी वो फॉर्मेट खेले, एक फॉर्मेट खेले, दो फॉर्मेट खेले, उसमें वो मैक्सिमम योगदान दे पाए। हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम प्लेयर को तीनों फॉर्मेट खिलाएंगे। आपने शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट खिलाया, नहीं चल पा रहे हो। यू नीड टू आइडेंटिफाई, एक्नॉलेज कि कुछ प्लेयर्स सिर्फ एक फॉर्मेट खेलेंगे और कुछ प्लेयर्स सिर्फ दो। जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आप एक बॉलर को तीनों फॉर्मेट में खिलाएं। वेरी वेरी टफ। रविशंकर से इज फ्रीलांस जर्नलिज्म गुड? नॉट एट ऑल। मिताश पूछ रहे व्हाट्स द स्टेटस ऑफ स्टेडियम्स इन द यूएसए? आई हर्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एट पार विद इंटरनेशनल मैचेस। बिल्कुल मिताश, मैं भी वही सुन रहा हूं, बट द प्रॉब्लम इज the New York Stadium is being built and we're 5 months away. That pitch is nowhere near to being ready. That stadium is nowhere near to being ready. The one in Florida has been around for more than a decade. The one in Dallas, Houston, the Texas grounds have hosted, Major League Cricket. The one in North Carolina has hosted Major League Cricket. हाँ, वो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड के नहीं है, पर एक T20 वर्ल्ड कप के लिए जो मैं सुन रहा हूं और जो मैं देख चुका हूं टीवी पे, स्ट्रीमिंग पे, the other grounds are fine. It's that New York ground which is really concerning to me. मनीष कह रहे हैं उमरान की इंजरीज खत्म नहीं हो रही है. How do you rate NCA rehabilitation? Not very highly if you watch my streams. Nihar is saying why Gill played over Jaiswal. I guess you missed it. At the toss, Rohit Sharma said that Shubman Gill was picked because Jaiswal was injured. Jaiswal woke up yesterday with a stiff back or stiff neck. That's why he played. ये कल रोहित शर्मा ने टॉस पे कहा था. चलिए दोस्तों, आधा घंटा होने को है, मैं इस लाइव स्ट्रीम पर विराम लगाता हूं. शुक्रिया आप लोग मेरे साथ जुड़े. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस, थैंक यू फॉर योर आंसर्स, थैंक यू फॉर योर agreements, disagreements. Always fun to engage with you. Have a great Friday. Have a good weekend. I'll see you on Sunday when we have the next T20. Love you all. Jai Hind.